और मैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ग्रहण करने के लिए श्री रजनीकांत जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वर्ण कमल प्राप्त कर रहे हैं श्री रजनीकांत जी। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए श्री रजनीकांत जी को दिया जा रहा है। रजनीकांत जी वो अभिनेता जिनके काम ने दर्शकों का न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि उन पर गहरा असर छोड़ा। उनका सफर शानदार रहा। भारत के सबसे चहेते और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं श्री रजनीकांत जी। This award is a recognition of Sri Rajnikant's acting skills, evident in various entertaining roles in his career of over 45 years in the Indian film industry. रजनीकांत जी की संवाद अदायगी, स्क्रीन पर दिखने वाला अनोखापन दर्शकों को बेहद पसंद है। वो देश के सिने प्रेमियों को पीढ़ियों से प्रेरित करते आ रहे हैं। सिने प्रेमियों की कितनी ही पीढ़ियां उनसे प्रेरणा पा रही हैं। I now request the Honorable Vice President and all dignitaries present on the stage to kindly be seated, please. और अब मैं सभी सिने प्रेमियों की ओर से माननीय श्री रजनीकांत जी से आग्रह करती हूं कि इस विशेष अवसर पर अपने उद्गार प्रस्तुत करें। माननीय श्री रजनीकांत जी, आपसे अनुरोध, कृपया हमारे साथ अपने विचार इस अवसर पर जरूर साझा करें। We request Sri Rajnikant ji to please say a few words. Most respected Honorable Vice President, respected IB Minister, respected Murugalji, dignitaries, all the award winners, good morning to everybody. I'm extremely happy to receive this prestigious award and my heartfelt thanks to Central Government for honoring me with this most prestigious Dada Saheb Phalke Award. I dedicate this award to my mentor, my guru, K. Balchandra sir. This moment, I remember him with great gratitude. And my brother Satyanarayana Rao Gaikwad, who is like my father, who brought me up with teaching me with great values and injecting me a spirituality in me. And my friend, a Karnataka bus transport driver, my colleague, Raj Bahadur. When I was a bus conductor, he was the one who identified the acting talent in me and encouraged me to join cinemas. And all my producers and directors who produced my films and technicians who worked in and co-artists and all the distributors, exhibitors, the media, press, and all my fans. And Tamil people, without them, I'm nobody. என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களான தமிழ் மக்களுக்கு நன்றி. ஜெய் ஹிந்த். बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री रजनीकांत जी, आपके शब्दों के लिए और शब्दों में छिपे एहसास के लिए। May I now request the Honorable Vice President of India, Sri M. Venkaiah Naidu ji, to kindly address all present here. Ladies and gentlemen, the Vice President of India. All right, so highest cinematic honor for actor Rajnikant. In fact, in April this year, Union Minister Prakash Javadekar had announced that Rajnikant will be receiving the 51st Dada Saheb Phalke Award for 2019. He said that he is one of the greatest actors in the history of Indian cinema. His contribution as actor, producer and screenwriter
has been iconic. While receiving the award, Rajinikanth dedicated this award to his mentors, those who encouraged him to join the film profession, and dedicated it also to all Tamil people.